Hello kiddos, how are you? So yesterday we have had a basic understanding of abacus, right? Today we'll work on a little more about that. But before that, our activity, let's wake up our body, our brain, everything to get ready, go. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Dance with me. Hello everyone, how are you? How are you today? Hello everyone, clap your hands, clap your hands, clap your hands. Hello everyone, clap your hands, clap your hands today. Hello everyone, touch your ears, touch your ears, touch your ears. Hello everyone, touch your ears, touch your ears today. Hello everyone, how are you? How are you? How are you? Hello everyone, how are you? How are you today? Hello everyone, stomp your feet, stomp your feet, stomp your feet. Hello everyone, stomp your feet, stomp your feet today. Hello everyone, jump and dance, jump and dance, jump and dance. Hello everyone, jump and dance, jump and dance today. Yippee! Okay, so this was testing content. I forgot to remove this. Now, okay. So kiddos, how are you? Or this is Friday and we're gonna meet tomorrow at 3 p.m. Okay? So कल 3 बजे आप ready रहिएगा, ma'am and kid. We will talk together, laugh together, work together, learn together. Okay? I'll ask something, you'll answer something. Okay? So let's start. So yesterday, what we have seen, how many of you have DIY their abacus tool? आप में से कितने लोगों ने अपना अपना abacus tool बनाया था बच्चों? Did you? So what number is represented here? Okay, what number is represented here? Focus more, focus and answer fast. Fast, fast, fast. It's 4, 3, 5, 3. Let's write it here. It's 4, 3, 5, 3. That means ones, tens, hundred, thousands. 4,353. Very good. So, with the help of, why did I say to include this abacus? To make your learning more interesting and actually working. When you engage parents, when they engage themselves, तभी वो अच्छे से, then only they will be able to understand it better, deeply and relate with that thing. Okay, so please अपनी ट्रेडिशनल मेथड से मूव ऑन करके थोड़ा सा वर्किंग, थोड़ा सा लाइक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड करिए अपने बच्चे की लर्निंग के साथ. ओके, नाउ बिकॉज why did I suggest you for this DIY abacus, spike abacus? Just because when they work on that, they not only just using their brain, their hands are getting engaged, their eyes are engaged, their whole concentration is there. और जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स, जब कभी भी हम मोस्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स किसी पर्टिकुलर टास्क में लगाते हैं, दैट मीन्स वी आर गिविंग और गेटिंग 100% ऑफ दैट.
ओके और अगर लेट्स सपोज आपका स्टूडेंट, आपका चाइल्ड आपके सामने बैठा है, आप पूरी तरह से एंगेज्ड हैं, आप पूरा उसे लर्निंग करा रहे हैं, दिस दैट, बट द थिंग इज चाइल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू बट इज एब्सेंट। दैट मीन्स आपके सामने बैठा है लेकिन वो सोच कुछ और ही रहा है, थिंकिंग समथिंग एल्स and imagining something about something else. So that time as their organs बस physically वो बैठा हुआ है, it's present physically but thinking of something else. That time what happens कि they do not get more of what you want to deliver, right? So it's very important for kids, for you parents, to just engage them as much as you can when you teach them something. Okay, so try to figure out all those manipulatives, all those helping hands, all those helping stuffs which can just collaborate with you and your child to make learning more engaging, including more sense organs. मतलब वो आँखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों को इंक्लूड करना, कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी करना, फिर से एंगेज हो जाना. दैट मीन्स आप टोटल कंट्रोल ले रहे हैं बच्चे की सेंस ऑर्गन्स का अपने पर्टिकुलर टास्क में. ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वांट टू डिलीवर समथिंग एंड वी वांट रिजल्ट. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. So this was 4353. 4 rods on thousands place, 3 on hundreds, 5 on tens and 3 on ones. So simple abacus understanding we have done. Second graders 3 digit, third graders 4 digit. Okay, we have done कि अगर आपका let's say for example if I just draw it. Okay, which rod is this? This is bacha. This is ones rod, right? This is tens rod. This one is hundreds rod. And but what about this? This is thousands rod. So if I just place, okay, what number is this? What number is this? Tell me fast. On tens we skip count by. On tens place we skip count by 10, correct? So it will be nothing but 10, 20, 30, 40. So it is 40, right? Great. Now if I just place 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what about this? Now what's changed this time? On hundreds place we skip count by 100. That means 100, 200, 300, 400. Second graders, please. Okay, I'll just decrease my speed. Second graders, you have to, when we are on tens rod, we have to skip count by 10. जब हम tens rod पर होते हैं तो हमें skip count by 10 करनी होती है. When we are on hundreds rod, we have to skip count by 100. Okay. जब हम हंड्रेड्स रॉड पर होते हैं द प्लेस टेल्स अस द टाइप ऑफ स्किप काउंट. जिस प्लेस पर हम हैं वो प्लेस डिटरमाइन करती है, हमें हेल्प करती है टू फिगर आउट कि हमें स्किप काउंट बाय व्हाट, हमें क्या स्किप काउंट करना है, बाय 1 करना है, बाय 10 करना है, बाय 100 करना है, बाय 1000 करना है. ओके, सो हियर द डॉट्स आर ऑन हंड्रेड्स प्लेस, सो विल स्किप काउंट बाय नथिंग बट 100. So 100, 200, 300, 400, 500, 600. So it is 600. 600 plus 40, it will be 640. Right, kids? Right? Okay. Now if I place some dots here, 1, 2. Now tell me what number is this? Now tell me what number is this? This is on ones place, so we'll skip count by yes 1. ये हमारा now we have beads, हमारी beads ones place पर हैं तो हम skip count by 1 करेंगे. Good, very good. तो चलिए let's do skip count by 1.
So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9. So we'll just add 9 here. So it will be 649. It will be 649. So this will become 649. Right? Any problem? If I just place one dot here, now what it will be? Now what it will be? Try to figure it out. What it will be? 1 here. How many? Hundreds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beads on hundreds place. How many on tens place? 4. How many on ones place? 9. So this is the number. This is the number. 1649. 1649. Now let's talk about application. Application based, see, we make mistakes when we do not concentrate on question properly. हमारी सबसे पहली मिस्टेक तब होती है जब हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन जो हमारे सामने है, क्वेश्चन आस्क अबाउट इट्स आंसर. What we try to answer, जो हमें समझ आ गया है, जो हम आंसर देना चाहते हैं, हम वो दे रहे हैं. बट क्वेश्चन आपका ट्विस्टेड फॉर्म में है, क्वेश्चन आपका हिडन फॉर्म में, इवन इट्स नॉट हिडन, इट्स कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ यू. बट देन टू we don't know what type of hurry we have, what type of instant answering we want to do, कि हम आधा क्वेश्चन रीड करते हैं. मैंने ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है. हम आधा क्वेश्चन रीड करते हैं और तुरंत आंसर देते हैं. And when we write a competition type of questions, जब हम इस type of questions attempt करते हैं, so जो question setting होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है कि अगर आप improper reading करते हैं, जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर भी ऑप्शन में होता है. अगर आप प्रॉपर रीडिंग मतलब उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो होगा, लेकिन अगर आप इफ़ यू आर जस्ट मिसगाइडेड, मिसलेड, तो वो मिसलीडिंग के बाद जो आंसर आ रहा है दैट विल ऑल्सो बी देयर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी थिंक, ओह I've read the question correct and I got the answer, just marked. But you have read the question wrong and you have got the wrong answer of that wrong implementation. This answer is wrong. So if I just sum it up, what I mean to, what I want to explain, अगर मैं सारी चीज़ों को सम अप करके बस एक बात कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको what you are reading, you have to focus completely on your reading. Okay, when you are reading, focus more, concentrate more, so that you do not एक भी word, एक भी कुछ भी क्वेश्चन से स्किप ना हो. आप पूरा पूरा रीड करें, पूरा अंडरस्टैंड करें, देन ओनली स्विच टू दी ऑप्शन. और ऑप्शन सिलेक्शन में भी अगर आपका ए आ रहा है तो आप ए को ही टिक कर रहे हैं. कई बार ऐसा होता है आंसर ए था, ओ शिट, बी ऑप्शन टिक हो गया और सबमिट हो गया. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी हैव डन दैट. तो नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं करना. दैट्स इट बच्चे. हम मिस्टेक करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम लर्न करते हैं, हम ग्रो करते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. 1649. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, I want to include some application today. Application means we have a, okay, if I say 20 more than this number, 20 more than this number, 20 more. So अब आप मुझे बताओ कि आप ones rod पे how many beads will you place, how many beads will you place on which rod to make the number 20 more? Okay, the question is, how many beads do we need to place on which rod to make the number
20 more. Did you get the question? Read the question once more. How many beads do we need to place on which rod to make the number 20 more? So हमें कितनी beads और कहाँ पर place करनी है जिससे कि हमारा number 20 more हो जाए? Okay, so do we need to place it on one's rod? क्या हमें इसे one's rod पर 20 beads ऐड करनी चाहिए? 100th rod पर, 10th rod पर, 1000th rod पर? Tell me, just think and tell me. Just think and tell me. Ma'am is listening. Tell me, bacha. Okay, you have your answer. Now listen to ma'am. This is 20. 20 means 2 tens. 20 means what, bache? 2 tens. 2 tens means we have to place 2 rods on tens. We have to place 2 beads on tens. हमें tens place पर 2 beads place कर देनी है. We have to place 2 beads on tens. So 1, 2. Now the number will be not 4 but 6. 1669. Okay, 1669. Now, if I want understood well what I have asked, to make it 20 more. 20 more करना है आपको, तो कौन सी रॉड पर आप कितने बीड्स डालेंगे? क्या आप वंस रॉड पर 20 बीड्स डालेंगे, 10th रॉड पर 20 बीड्स डालेंगे, 100s पे, 1000s पे? What will you do? So what we did, it was 20 more बच्चा, it was 20 more. So 20 can be written as 2 tens. 20 means 20, if we just represent 20, so 20 will be like, okay, 1, 2, this is 20. 20 means 2 tens and 0 ones. This is 2 tens and 0 ones. So we just have to place 2 beads here. 10th rod पर, 10th spike पे हमें 2 beads और extra add कर देनी है. It will be 20. Okay. Now, if I ask you the question, if I just change something here and ask you the another question. So what we are doing today, we are just applying what we have. ये हमारा abacus questions में कैसे application क्या होता है हमारे abacus का, questions कैसे frame हो सकते हैं, I'm just discussing that. How many beads do we need to remove from this abacus to make the number lie between 1000 to 1000 300. What did I ask? Okay, चलिए पहले second grader से पूछ लेते हैं, then we'll switch to third grader. How many beads do we need to remove from this abacus to make the number lie between 400 and 500? Okay, you have a limit. You have this number. अब आपको क्या बनाना है? ऐसा नंबर जो कि 400 और 500 के बीच में आता हो. मतलब 400 और 500 के बीच में आने वाला नंबर will start from 401, 402, 403 and so on till 499. ये सारे नंबर 400 से 500 के बीच में आएंगे. तो आपको ऐसा ही कोई नंबर बनाना है. तो इसके लिए हम कौन सी रॉड से कितने बीड्स रिमूव करें? ओके, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस. Do I need to write whole question? Let me write. How many beads from which rod do we need to remove to make the number lie between 400 and 500. So option A is
चलिए, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर बच्चा. You have this number, you have to make the number lie between 400 and 500. तो आप किस बीट से किस रॉड से कितनी बीट्स रिमूव करोगे कि आपका नंबर 400 और 500 के बीच में लाई कर जाए. ओके, जस्ट पॉज इट अ वाइल. मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे. पॉज करिए, अपना आंसर निकालिए, फिर मैच करिए. मैं डिस्कस करने वाली हूँ सोल्यूशन, तो आप 1 मिनट पॉज करके अपना आंसर निकाल लीजिए. ओके, तो लेट्स डिस्कस दी solution here. We have to make the number is 1. Let me change the ink for a while. The number is 1 6 6 9, right kids? 1 6 6 9. And what we need to do, we have to make the number between 400 and 500. ओके, सो अगर 400 से 500 के बीच में नंबर हमें बनाना है तो 100th प्लेस क्या होगी? 100th प्लेस विल ऑलवेज बी 4 बिकॉज द नंबर बिटवीन 400 and 500 हैव प्लेस 4 ओनली ऑफ 100th प्लेस, कैन हैव 4 बीड्स ऑन 100th प्लेस. स्टार्ट काउंटिंग. 400 और 500 के बीच में नंबर्स 401, 402, 403, 404, 410, 420, 450, 480, 490, 499. What's common here? The place 4. The place of the digit on 100th place, that is 4. So ये तो श्योर है कि हमें 100th place पे 4 रखना है. It's sure. We have to put, we need 4 on 100th place. So what we need to remove, we have 6 rods, we have 6 rods. So if we just remove 1 rod, it will be 5, but we have to stick on 4. So we need to remove 2 from here. When we remove 2 beads from here, it will be 1 4 6 9, right kids? When we remove 2 beads from 100th place, it will be 1 4 6 9. Now, is it our answer? Nope, because we have to make a number between 400 and 500, not 1400 and 1500. So this 1000 is troubling us. So what we'll do, we will just remove this bead also. After removing this bead, we have 0 bead on thousands. So it will be 4 6 9 only. Just count 0 here. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have this number 469. 469 is a number that lies between 400 and 500, right? 469 लाई करता है 400 और 500 के बीच में. तो हमें क्या करना था, हमें अपने एबिकस टूल से, एबिकस स्पाइक से कुछ बीड्स रिमूव करनी थी जिससे कि हमारा नंबर 400 और 500 के बीच में लाई कर जाए. सो व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ कंडीशन, हमेशा याद रखिए जो आपका स्मॉलर नंबर है दैट इज 400. 400 और 500 में 400 इज स्मॉलर. 400 100th प्लेस इज 4. सो आपको भी इस जो नंबर है, जो नंबर लाई करेगा, जो न्यू नंबर फॉर्म कर रहे हो एबिकस से, उसमें 100th प्लेस पर 4 ही होगा. तो अगर आपकी 100th प्लेस पर 6 7 8 9 कितनी भी बीड्स हैं, आपको 4 करनी है. तो 4 से जितनी भी एक्स्ट्रा हैं, यू हैव टू रिमूव ऑल ऑफ देम. नाउ व्हाट वाज द केस हियर, वी वर हैविंग वन मोर बीट ऑन 1000th प्लेस ऑल्सो. इस केस में हमारे पास 1000th प्लेस पर भी बीट था, तो हमने वो भी रिमूव कर दिया. दैट मीन्स हमने 1 बीट रिमूव किया है 1000th प्लेस से एंड 2 बीट्स रिमूव की हैं 100th प्लेस से. एज पर दैट व्हाट्स आवर आंसर? 1 बीट फ्रॉम 1000, 1 बीट फॉर 100. दिस इज रॉन्ग. नो, 1 beat from 1000 and 2 beat from 100. 2 beats 100 से, 1 beat 1000 से. So B is the correct answer. So if you have answered it B, you are perfectly correct. Okay, so बड़ा hodgepodge हो गया है. Let us remove this and एक बार फिर से start करते हैं. There is some calibration problem. Okay, no problem. So what we did here, we have seen how to implement more or
less, like 20 more we have seen. Similarly, as we have seen 20 more, it could be 50 hundreds, 20 hundreds, 3 hundreds, 5 hundreds. That time what we need to do? We need to figure out it like what I'm going to discuss right now. Okay, so ये भी remove कर दे, चलिए remove ही कर देते हैं. Let's clean the board. Okay. So if we have this abacus here, 1 rod, 2 rod, 3 rod, 4 rods. That means ये 4 digit number है. This is ones, tens, hundreds, thousand. Okay. If I ask you the question, which number Okay, so here we have our question, and I'm just placing some beads here to make the number. Okay, now your options. I'm writing options here. Okay, this is the option, these are the options, and this is the question. Try to read the question, pause it for a while, solve it, and then let's check the answer. Okay, now I'm going to discuss. So, see, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप जस्ट पॉज करके अपना आंसर निकाल लीजिए और उसके बाद फिर से रिजॉइन कर लीजिए. हाँ, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. ओके, which number is great? So how many of you have answered it? A part. आप में से कितने बच्चों का आंसर A है? How many of you have answered it B part? चलिए देखते हैं. A ठीक है, B ठीक है, C करेक्ट है और D. Which one is correct? A, B, C or D? Which number is greater than? What we need to focus? Greater than the number shown on the abacus. Now, the answer will be, the number is, let's write the number first. This is 1, then 2, then 4, then 5. 1, 2, 4, 5. How many of you have just marked it after discovering the number? Most of you must have done this. Actually, this is called the mistake. जो सबसे पहले हम बस रीड करते ही आंसर मिल गया, चलो टिक करते हैं, लेट्स टिक, वी हैव गॉट द आंसर. बट दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज द आंसर ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड हेयर. बट ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है. द क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन ग्रेटर देन. अब किड्स, ये ग्रेटर देन वर्ड आपसे छुपाया तो नहीं गया है. इट वॉज नॉट हिडन, इट वॉज रिटन हेयर. बट आपके ब्रेन ने क्या किया, एबिकस से नंबर को निकाला और जैसे ही नंबर दिखा टिक कर दिया. आगे का प्रोसेस वॉश आउट हो गया, वो प्रोसेस ही नहीं होने पाया. राइट? सो यू हैव टू फोकस मोर वाइल रीडिंग द क्वेश्चन इफ यू डिड इट रॉन्ग. नाउ ग्रेटर देन दिस, so greater than this is 1 2 4 6. we have done comparing numbers कंपेयर करना हमें आता है. तो 1245 से बड़ा जो है 1246 है. 44, 43, they are smaller, so it will not be the answer including this also. So the correct answer is nothing but what? B part. So all students who have answered it B, clap for all of you. Or literally this is not an easy question. Okay, this is not an easy question just because the complexity of language, and it's not the complexity of language then too, as you guys are very young. So in that case it could be कि आपको ज़्यादा concentrate करना है. Okay, so
if I just do some manipulation here, and if I make 48, okay, now if I just remove this and write this, now I hope not only many, all of you will answer this. Which number is less than the number shown on the abacus? Which number is less than the number shown on the abacus? Those are the options. Okay, so the answer will be correct. The answer is D part. D part is the correct answer because जो number है उससे छोटा we have on D part, right? Now question can be like this also. Which number is, I'm just changing the ink. Which number is the successor of the number shown on the abacus? Which number is the successor of the number shown on the abacus? So जो abacus में number shown है उसका successor they are asking. They are not asking about the number. They are talking about the successor of that number. So when we discuss the successor, that means we need to add, we need to increase it by one more. So one more will be, right, this one. So again we have B part correct. Okay, they are mixing, so let me just clean the thing here a little bit. Perfect. Now the answer for this particular question will be B part. Right, kids? Again, if you have answered it B, clap for you. Yippee! You are learning, growing. Great job. Now, if I just do a little bit change here, and in place of successor, if I just, kiddos, if I just write the predecessor, if I write the predecessor, then what the answer will be? Answer fast. Ma'am is waiting. The answer will be nothing but D part. It will be D part. Right. Because this is the number. Its predecessor means 1, 2, 4, 5 minus 1. It will be 1, 2, 4, 4. 1, 2, 4, 4 is on the part. Great job. See, हम predecessor, successor, ये सारा कुछ more or less सारा कुछ discuss कर चुके हैं ना, तो आप comfortable हो ना what we are discussing? Okay, if I ask you the question, the same, I just wanna my motive is to show you each and every possibility जो भी यहाँ पर हो सकती है. Okay, if I ask you the question, which number is which number is 100, okay, 10 tens more than the number, same question but options change होंगे बच्चे, या options, let's remove the options, आप मुझे फटाफट आंसर करो. Which number is 10 tens more than this? Which number is 10 tens more than this? So what is being asked? Did you get the answer? Okay, अगर आपको without मैम की help के बिना करना है, आप करो. Kids, I want you to do it yourself और फिर मैच करना है. Okay, so which number is 10 tens more? Two things to focus. One is 10 tens and another is more. Okay, more means we have to add 10 tens. We have to figure out 10 tens. 10 tens means 10. 10 times 10 is 100. So for 100, what we need to do? We just have to place one more bead here on 100. So when we make it 10 tens more, the number will be 1, 3, 4, 5. How many of you have answered it? 1, 3, 4, 5. Great job. A big thumbs up.
And don't forget to just press your thumbs up to that particular position, like, okay. So this was what we have discussed when we have just changed 10 tense. If I just say 200s, no, then is correct actually. 200 less, 200s less, 200s less. That means this time this is the number, and 200 less means you have to remove 2 beads. Now the number will be 1145. Now the number will be 1145, right kids? So it could be anything. The framing can be of any type. I would just try to include every type of question in our quiz, स्टार क्विज में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर तरह का क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर लूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने में अच्छे से हेल्प हो सके. नाउ मुझे लगता है आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, तो मैं वाइंड अप करती हूँ. ओके, आई जस्ट वांट टू अनाउंस वन थिंग दैट कल हमारे स्टार स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं. आज का आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा इट विल बी लास्ट पूरे वीक के. आज हमारे इवनिंग में स्टार्स काउंट किए जाएंगे और कल हम आपको शो करेंगे वो स्टार्स. तो कल की क्लास में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है. वी विल लाइव एट 3 o'clock. और कल तो मैं अटेंडेंस लेकर के बैठूंगी. वो सारे स्टूडेंट्स जो हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, आई मीन जिन्होंने भी क्विज दिया है, उनकी अटेंडेंस मेरे पास रहेगी, जिससे कि मैं मैच कर सकूं आपके आंसर्स, आप हमारे कम्युनिकेशन, आप आंसर कर रहे हैं लाइव सेशन में या नहीं, आपका परफॉर्मेंस, एवरीथिंग. सो वी विल हैव एन अटेंडेंस सेशन टुमारो ऑल्सो. एंड नेक्स्ट थिंग, बहुत सारे लोगों को अभी स्टार रिकॉर्ड, कैसे स्टार स्टूडेंट बनना है, स्टार क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है, दे हैव सम कन्फ्यूजन. तो कल मैंने एक स्क्रीनशॉट पेस्ट टीम ने किया है. सो वो स्क्रीनशॉट आपको मिल गया होगा. होपफुली वो आपको गाइड कर रहा होगा. जो भी आपको लिंक मिलता है क्विज में, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक. सॉरी, जो भी आपको ग्रुप में लिंक मिलता है, आपके क्लास ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको लिंक मिला ग्रुप में, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. आफ्टर क्लिकिंग दैट लिंक, द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग. जस्ट on the video you will see, this is the video. Here on the right corner you will see this V shaped arrow. आप उसे क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलकर आ जाएगा. आफ्टर द ओपनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल सी द लिंक ब्लू इन कलर. लिंक हैज़ सम डिफरेंट अपीयरेंस. तो वो लिंक होगा थोड़ा सा मीनिंगफुल, वो सेंटेंस नहीं होगा. सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मीनिंगफुल होगा, वो नहीं होगा. दैट इज़ द लिंक. जस्ट क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट दैट क्विज. उस क्विज को अटेम्प्ट करना है, आपको सबमिट कर देना है. एज सून एज यू सबमिट वी विल गेट योर रिस्पॉन्स. ओके, आपका रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा. नाउ स्टार स्टूडेंट कैसे बनते हैं? आपको एक वीक में 4 to 5 क्विजेज मिलते हैं. अब 4 to 5 quizzes, each quiz contain 10 marks. 10 marks means stars and marks equal. 10 marks means 10 stars. अब total of 40 और 50. Let's suppose 5 quiz आपको मिले हैं, तो 50 आपके stars total हैं. Out of 50 जो भी student maximum score करता है, like अगर आपके ग्रुप में मैक्सिमम 50 on 50 जा रहा है, तो 50 on 50 स्टार हो जाएगा स्टार स्टूडेंट उस पर्टिकुलर वीक का. या 50 on 49, 48, 47, जिसके भी सबसे ज़्यादा स्टार्स हैं वो स्टार स्टूडेंट ऑफ द वीक बन जाएगा. या अगर ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम स्कोर होल्ड कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स स्टार स्टूडेंट्स ऑफ द वीक हो जाएंगे. ओके, होप इट वुड बी क्लियर टू यू. Now, just after watching this, the star quiz is waiting for you. Just click there and go. So meet you tomorrow live at 3 p.m. Till then, bye-bye, take care and keep learning with me and math. And one more thing, आप अपने friends के साथ share भी कर सकते हैं और just उन्हें challenge कर सकते हैं कि आप मतलब क्या स्कोर वो कर रहे हैं, क्या स्कोर आप कर रहे हैं, और उन्हें invite भी कर सकते हैं लाइव सेशंस के लिए. और जैसे ही आपको लिंक मिलता है
लाइव सेशंस का, तो आप लिंक पे क्लिक करके अपना रिमाइंडर ऑन कर दिया करिए। जैसे ही हम कभी लेट भी हुए, इफ़ वी आर लेट और अर्ली, यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन इंस्टेंटली एज सून एज वी गो लाइव। इधर हम लाइव हुए, उधर आपके पास आ जाएगा कि योर टीचर इज लाइव नाउ। ओके, सो मिस होने की कोई कंडीशन नहीं रहेगी। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ।